So hello guys, we are live on YouTube with another day of Python, learning Python. आ जाओ सारे. I hope voice is clear, everybody. So हम लोग Python का आज डे 10 है आई गेस. डे 10 हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आज. डे 10 आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. आ जाओ फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी. Let's start the series. शेयर कर देना. आज हम लोग डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस, कि पाइथन के अंदर डेकोरेटर्स क्या होता है. ठीक है, जिसको नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं अभी. एक बार मैं डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर देता हूँ. डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. आ जाओ. कम ज्वाइन विद द डेकोरेटर्स. लास्ट पार्ट के अंदर हमने जनरेटर्स कर लिए थे आई गेस. यस, जनरेटर्स हमने कर लिए थे एंड इटरेटर्स हमने कर लिए थे. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद डेकोरेटर्स इन पाइथन. तो जिनको नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पाइथन 100 डेज चैलेंज हम लोग कर रहे हैं. आज हमारा डे 10 है और इस डे 10 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लर्न करेंगे हम लोग इसको डेकोरेटर्स को, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इसके बिहाफ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली प्लेलिस्ट ओपन कर लेना आप लोग. लेट्स कोड पाइथन लाइव 2026 और आज हमारा है डे 10. सो वी आर हियर विद द डे 10. ठीक है, तो टिल 9 हमने कर लिया था हमने पाइथन इटरेटर्स, जनरेटर्स एंड डेकोरेटर्स. सो डेकोरेटर्स वाला पार्ट रह गया था डे 9 के अंदर, वो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, एक बार जो भी लाइव है चैट में लिख के बताओ कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है. इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर और नॉट टू यू गाइज, just let me know and welcome to the stream those who are watching, and make sure to like the video and subscribe the channel if you haven't subscribed it yet now. Just let me know when we need to start. If everything is clear, we'll start in a minute. So for our watching right now, make sure to subscribe the channel guys and like the video if you haven't liked it yet now. तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में. ठीक है, डेकोरेटर्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं.
Just a second, I'm coming. सो ये हमारा कौन सा डे था? डे 9 था हमारा लास्ट में, और इसका मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अभी विद द डे 10, पाइथन डे 10। ठीक है, इस फोल्डर को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल को बना लेते हैं यहाँ पे डेकोरेटर्स के नाम से, डेकोरेटर्स डॉट पी। डेकोरेटर्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे फंक्शन डेकोरेटर हो गया, क्लास डेकोरेटर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले डेकोरेटर्स को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डेकोरेटर्स। ठीक है, डेकोरेटर क्या होता है? बेसिकली डेकोरेटर भी एक फंक्शन ही होता है जो क्या करता है, दूसरे फंक्शन को एज एन इनपुट ले लेता है, और क्या करता है, उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करके उसी के अंदर क्या करता है, रिटर्न करता है एक नया फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आप देख सकते हो कि फंक्शन क्या करता है, सॉरी डेकोरेटर क्या करता है। डेकोरेटर इज़ अ फंक्शन दैट रैप्स अनदर फंक्शन एंड मॉडिफाई इट्स बिहेवियर। क्या करता है, मॉडिफाई इट्स बिहेवियर। ठीक है, तो और एक दूसरी डेफिनेशन में मैं देता हूँ यहाँ पे। तो अ डेकोरेटर इज़ अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन और क्लास एज एन इनपुट, it adds some extra functionality to it and returns the modified function with changing its original code, right? ओरिजिनल कोड को क्या करके देता है, चेंज करके देता है आपको। ठीक है, तो फंक्शन होता है, क्या होता है डेकोरेटर? डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट अनदर टेक्स अनदर फंक्शन और क्लास, ठीक है, क्लास एज एन इनपुट एंड एड्स Emmanuel Samuel. Cheers, brother. Welcome to the stream. So we are learning decorators in the Python. Okay, let me tell you. I think I haven't shared the display capture right now. So let me share it. So I just have created a new folder for Python day 10 with the name of decorators.py. I have created a file, and I'm writing a definition here. Decorator is a function that takes another function as an input, and it adds some extra functionality to it, right? It adds some extra functionality to it. ठीक है, and as input, and it extends, or you can say it modifies. Please, I have no idea of Python, so you will need to be very well explanatory. Okay, I'll try my level best to do that. So basically we are learning a function in Python, right? Not function, basically a topic is going on right now which is called decorator. A new topic is here, and I am explaining that what is a decorator. So decorator is a function basically which takes another function, or you can say which takes another class as an input, and it extends or it's modify its by default behavior, right? It modifies its behavior and it returns the another function, the same as in JavaScript. If you have learned the JavaScript or you have some idea of JavaScript, then you must have known what are the functions. Okay, so here is the same concept of functions. So decorator is a type of function basically which takes another function or class as an input, and it extends or it modifies the original behavior and returns another function. That's all. Returns a new function. Let me decrease the volume a bit. All right, so you can think like a gift wrapper basically. So gift is, what is gift? Let's say I have gift. Let me explain in the exactly draw. Exactly draw a whiteboard. So let's say you have a gift box, right? This is your gift, and it wraps by its wrapper, right?
So this is your wrapper, the gift wrapper basically. Okay. And now what is this wrapper? This wrapper is basically a decorator. What? Decorator. Okay. So the wrapper of the gift, of the actual gift, is called a decorator. 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 And the actual gift inside the wrapper is called a function, or else you can say the class. Okay, is called the function. That's all. You have, you know the topic already. What is a function? What is a decorator? So decorator is a wrapper basically, which the wrapper, the gift inside the wrapper stays the same, but the wrapper is adding some extra functionality to the gift. So these are called decorators in Python. Okay, these are called decorators in Pythons basically, right? So this is the example that I have given to you of like what are decorators in Python. So decorator is a wrapper basically, you can say, like let's take an example of a gift box. So the blue part is your original gift, this part is your original gift, right? And the wrapper around it is called your decorator, and the gift part, the actual gift part, is your function, right? That's it. So the gift function stays the same, means the gift part is same. You can change its wrapper again and again and again, to add some its look, or its, if you want to modify it, you can just change the wrapper, you can just change the things. Yeah, decorators are like more div in CSS, right? You can say that, not basically div are the containers for storing the elements. Okay, div is in HTML, not in CSS. But for styling part, you must have, you need to put your HTML elements inside a div container, so that you can do your styling work easily. Okay, so here decorators are basically a wrapper inside a function. Sorry, decorators is also a function that takes another function as an input. Okay, input, and modify its original behavior and returns the another function. That's all. क्या पढ़ा रहे हो अर्षित? पाइथन में डेकोरेटर्स को पढ़ा रहा हूँ ब्रदर. सो वी आर लर्निंग डेकोरेटर्स इन द पाइथन. सो डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर क्या होता है? एक फंक्शन होता है बेसिकली. क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, दूसरे फंक्शन या फिर क्लास को एज एन इनपुट के तौर पे लेता है. अभी मैं लेके दिखाऊंगा आपको. और क्या करता है, उसका जो बिहेवियर होता है ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है ना. जैसे मेरे पास एक गिफ्ट है, गिफ्ट पड़ा हुआ है, राइट. मैं उसको अगर पैकेज कर दूँ अच्छे तरीके से, राउंड राउंड राउंड, अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके से कर सकता हूँ, तो क्या होता है, उसका जो अपीरियंस है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, राइट. बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, और वो एक नया एक गिफ्ट बन जाएगा. मतलब बहुत अच्छा खासा गिफ्ट बन सकता है वो, है ना, अगर उसका रैपर वाइज सही से होगा. बस यही था आपका डेकोरेटर्स. ठीक है, कि यही क्या होता है, आपके डेकोरेटर्स होते हैं किसके अंदर? पाइथन के अंदर. ठीक है, पाइथन के अंदर. ठीक है, दैट्स ऑल. और यूज़ केस कहाँ पे कर सकते हो इस डेकोरेटर्स वाले टॉपिक का, लाइक, है ना, कि भाई इसका यूज़ केस क्या है? यूज़ केस आप बेसिकली ऑथेंटिकेशन में यूज़ केस कर सकते हो, लॉगिंग्स में कर सकते हो, व्हेन यू वांट टू ट्रैक अ फंक्शन रन्स. जब ये फंक्शन चलता है पाइथन का, जब उसको ट्रैक करना होता है आपको, तो वो कर सकते हो इनका यूज़ करके, है ना. और कैश वैश की प्रॉब्लम आती है, उसको जो रिजल्ट्स होते हैं उसको ट्रैक कर सकते हो आप लोग, है ना. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली. जैसे लॉगिन करना हो बिफोर रनिंग अ फंक्शन, जैसे कोई भी लॉगिन करा तो लॉगिन का फंक्शन चलने से पहले क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन आपको चेक करनी है, तो यहाँ पर डेकोरेटर्स का क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, है ना. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, तो डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन क्लास एज एन इनपुट एंड इट एक्सटेंड्स, मॉडिफाइज इट्स बिहेवियर एंड रिटर्न्स अनदर फंक्शन, या फिर रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन. ठीक है, लेट्स, तो यू कैन से डेकोरेटर और फंक्शन डेकोरेटर, राइट. फंक्शन डेकोरेटर. So we are learning the first function decorator. This is a simple example, right? Function decorator is a function that takes another function. This is the same thing. Okay, so use case I already told you, and the what project you can build using this particular topic is, means the projects where this particular topic comes as an this particular topic plays an important role. So basically login system with authentication decorator, API request logger, and performance track tool. Inside it you can use this.
So here I have taken one example. So I have defined one of my decorator with the name my decorator, and it's taking another function as an input, which is named function func, and you can also rename it. Okay, and I have defined here wrapper. This is a new function. Okay, so let me write here for you. Okay, let me write here for you. सो पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, राइट। क्या बनाते हैं, एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जैसे माई फंक्शन हो गया या फिर कुछ ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, या माई डेकोरेटर हो गया, लेट्स से माई डेकोरेटर हो गया। माई डेकोरेटर के नेम से मैं फंक्शन का नाम बना लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक डेकोरेटर है ये क्या है, माई, ये एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन एंड इनसाइड इट यू आर टेकिंग अनदर फंक्शन एज एन इनपुट, ठीक है। सो यू कैन से अनदर फंक्शन एज एन इनपुट. And what you are doing right now here, you are taking wrapper this time. What you are taking, you are taking wrapper. Okay, so you are defining a wrapper, right? What is this? This is the new function basically, a wrapper function, right? Which will do print. Let's say this is something code, this is some code before executing the main part, before executing the decorator part, or you can say because before executing the main code. Okay, so you have defined another function inside this particular function, right? And after this I will call what, I will call my another function here, right here. I'll just call my another function here. What is this meaning? Calling the original function basically, right? We will call the original function now. What is the name of the original function? Let's say and after this I'll print something. What is this? Is some code, this is something after executing the decorator, you can say. Okay, this is the codes after executing something. Okay, so this is before executing my program, this is after executing my program. I'm printing a string basically. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये जो अनदर फंक्शन है वो मैंने एज एन इनपुट के तौर पे ले लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है, वो मैं डेकोरेटर्स का यूज़ करके मैं क्या करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यूज़ करते हैं यहाँ पे माई डेकोरेटर, ठीक है, माई डेकोरेटर। सो एक ये आप बोल सकते हो यहाँ पे कुछ बना लो, डिफाइन कर लो। लेट्स से हाई, से हाई नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ कॉल कर लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट वगैरह मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट करा, और दूसरा मैंने रैपर को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं कराया है, ठीक है। लेट मी चेक वंस, लेट मी चेक इफ़ आई एम गोइंग राइट। ओ हाँ या राइट, रिटर्न रैपर। तो रिटर्न रैपर मैंने क्या करा है, यहाँ पे नहीं कराया है। तो रिटर्निंग द मॉडिफाइड फंक्शन, रिटर्न this particular function after modifying its original function. Okay, you need to do like this, return wrapper. Now it is okay, ठीक है। And after that you need to use my decorator. This means say hello or say something like this, and you can just print hello or something like that. Okay, so say hello, and I'll just printing here hello in between something. In between something means between of printing something before the code execute, and this is something after my program finishes, and this is in between something, right? So this is my one of my function. Okay, and if I want to modify it, if I want to like modify it, so I'm taking inside this particular function, my decorate function. Okay, and if I will run it, what output will come, let's see. Let's see, it's not coming right now, so there is some issue related in our code. I think here is this will come inside it. No, my decorator, my decorator, my decorator. Okay, another function, another function. Let me check the code once. So I didn't call this particular function. Okay, so this will work now. ये क्या करेगा, भी वर्क करेगा, देखें। क्या कह रहा है कि से हाई नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, वाई। क्यों नहीं कर रहा है भाई ये कॉल,
say hi is not working. Let's check this. What is the problem here? The calling decorated function, original function is this. रिटर्न रैपर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई एम प्रिंटिंग समथिंग। और रिटर्न रैपर मैं इनसाइड ऑफ दिस रैपर कॉल कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है, बाहर कॉल करना है इसको, यहाँ पे इस लेवल पे कॉल करना है जहाँ पे मैं रैपर डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। तभी तो ये क्या होगा, कॉल, तो फिर उसके अंदर चला गया था वो। ओके, तो ये मिस्टेक था। क्या करो, इसको रन करो तो देखो, दिस इज समथिंग कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग, ये लाइन प्रिंट होगी, राइट। एंड टू एडिंग सम मॉडिफाइंग दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से दिस फंक्शन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक अनदर फंक्शन है, मैंने एज एन इनपुट के तौर पे लिया था, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। और उसकी चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ बाद में, राइट। और फिर मैंने क्या कर दिया, दिस इज समथिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ क्या है, बाद में आया, और बीच में मेरे एक लाइन प्रिंट हो क्या, हेलो इन बिटवीन समथिंग। तो ये क्या है, ये वाला फंक्शन किसको किसको इंडिकेट कर रहा है, इस वाले फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेकोरेटर, ठीक है। तो दिस इज माई फंक्शन डेकोरेटर। सो कॉलिंग डेकोरेटेड फंक्शन, ये वाला मेरा क्या है, डेकोरेटेड फंक्शन है, ठीक है। तो एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, अनदर फंक्शन एज एन इनपुट। तो ये मेरा एज एन इनपुट के तौर पर अनदर फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड इस और मॉडिफाई इट्स बिहेवियर एंड रिटर्न्स एन न्यू फंक्शन। एक न्यू फंक्शन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे रैपर के नाम से रिटर्न करा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपके पास डेकोरेटर्स के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, राइट। फंक्शन डेकोरेटर होता है, क्लास डेकोरेटर होता है, इसके अंदर क्या लेता है, कोई दूसरे फंक्शन को, या मतलब एक ये भी एक फंक्शन ही है जो दूसरे फंक्शन को लेता है एज एन इनपुट के तौर पे, और उसका कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और रिटर्न कर देता है एक नया फंक्शन। बस दैट्स ऑल, इतना याद रखो, इतना सिंपल सा याद रखो आपके पास, है ना, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ये तो मैंने क्या बना दिया, आपका फंक्शन डेकोरेटर बना दिया है। अब मैं क्या बनाता हूँ, दूसरा क्लास डेकोरेटर बना रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर डेकोरेटर्स के अंदर। तो एक था हमारे पास फंक्शन डेकोरेटर, बेसिकली डेकोरेटर ही फंक्शन डेकोरेटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाते हैं अब क्लास डेकोरेटर, ठीक है। क्लास डेकोरेटर हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास डेकोरेटर क्या, तो क्लास डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ क्लास एज एन इनपुट दिस टाइम एंड मॉडिफाइज और एनहेंस इट और रिटर्न्स अ न्यू क्लास सेम एज इट इज। वहाँ पे क्या था, फंक्शन ले रहा था, यहाँ पे क्या ले रहा है आपके पास, क्लास को ले रहा है। यहाँ पे क्या ले रहा है, क्लास को ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। तो कुछ ये एंड के टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे पाइथन के अंदर, डेकोरेटर्स वगैरह, ठीक है। इनको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे क्या, फंक्शन डेकोरेटर्स हो गए। अब आते हैं हम लोग क्लास डेकोरेटर पे। तो क्लास डेकोरेटर क्या सेम है, अब क्या लेगा, क्लास लेगा एज एन इनपुट के तौर पे और मॉडिफाई करने वाला उसका बिहेवियर। तो अब की बार क्या समझ सकते हो आप, थिंक ऑफ ए स्कूल एडिंग रूल्स टू एवरी स्टूडेंट ऑटोमेटिकली। दिस स्टूडेंट इज सेम बट स्कूल डेकोरेटर एड्स बिहेवियर, ठीक है। क्या करता है स्कूल डेकोरेटर, क्या करता है, स्कूल का होगा आपका डेकोरेटर हो गया है, और जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, आपकी क्लास हो चुकी है, क्या हो चुकी है, क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग अलग रूल मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ये तो क्या हो गया आपके पास, स्कूल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास अलग अलग स्टूडेंट है, स्टूडेंट वन, ठीक है, 1 2 3, शॉर्टकट की क्या है इसकी, 1, इसको लॉक कर दें क्या, चलो। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये, अब सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये अलग अलग स्टूडेंट्स हो गए आपके, है ना। तो ये आपका क्या है, स्कूल है। सो दिस इज योर स्कूल and inside it there are many students present, 1 2 3 4 5, sorry, just wait a second.
तो दिस इज लाइक दीज आर योर स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास डेकोरेटर का। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास डेकोरेटर का। ठीक है, तो स्कूल क्या होता है आपका? स्कूल क्या होता है आपका? एक डेकोरेटर होता है। क्या होता है? क्लास डेकोरेटर होता है। ठीक है, क्लास डेकोरेटर। एंड दीज स्टूडेंट आर योर क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके पास? क्लासेस हो गए हैं। ठीक है, तो स्कूल क्या करता है? ये जो सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट तो सारे सेम है, वो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, ये स्टूडेंट ये स्कूल जो इनके लिए अलग अलग रूल्स निकालता है ना, हर एक स्टूडेंट के लिए। वैसे क्या करता है क्लास डेकोरेटर? हर एक क्लासेस के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो द स्टूडेंट इज़ योर क्लास एंड योर स्कूल इज़ योर डेकोरेटर विच एड सम बिहेवियर टू इट। ओके, एड सम बिहेवियर टू इट, दैट्स ऑल, सिंपल। तो एडिंग मेथड्स डायनेमिकली, यूज़ केस क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, क्लास डेकोरेटर का? मेथड्स को डायनेमिकली आप ऐड कर सकते हो, रजिस्टरिंग क्लास कर सकते हो प्लगइन सिस्टम से, कुछ सिस्टम्स को वैलिडेट कर सकते हो आप इसमें, राइट? जैसे प्लगइन सिस्टम बनाना हो, ओआरएम मॉडल एनहांस कर बनाना हो आपको, ऑटो लॉगर फॉर क्लासेस बनाना हो, है ना? कुछ इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, चीज़ें बना सकते हो किसका? क्लास डेकोरेटर का यूज़ करके। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ चुका है। ठीक है, एक क्लास का एग्जांपल आ चुका है। तो दिस फंक्शन टेक्स अ क्लास एज एन इनपुट। ये देखो क्लास ले रहा है प्योर, है ना? फंक्शन नहीं ले रहा, क्लास ले रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ एक लैम्बडा फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना? लैम्बडा फंक्शन ले रहा हूँ, देख रहा है, देखो लैम्बडा सेल्फ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हेलो फ्रॉम डेकोरेटर मेरे पास क्या होने वाला है? प्रिंट होके आने वाला है। तो एडिंग अ न्यू मेथड ग्रीट टू द क्लास डायनेमिकली, देखो इस टाइप से क्लास डॉट ग्रीट मैंने किया है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? लैम्बडा फंक्शन मैंने यूज़ किया है और सेल्फ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फिर मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया क्लास को, मतलब मॉडिफाइड क्लास को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो गुड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या क्या यहाँ पे @@ ग्रेटिंग, कुछ यहाँ पे ऐड हम बिहेवियर ऐड करना चाहते हैं उसमें, तो @@ ग्रेटिंग में लगाऊंगा कि इसमें इस वाले फंक्शन में जो भी मैंने नाम लिया था। तो @@ ग्रेटिंग में मुझे क्या करना है? कुछ ऐड करना है। तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया? क्लास पर्सन नाम से मैंने क्या करिए? डिफाइन करा है। ठीक है, तो क्लास डेकोरेटर के लिए @ ये जो भी आप लगाओ वहाँ पे फंक्शन डेकोरेटर मतलब सेम @ करके आप लगा दो। ठीक है, फिर क्या किया यहाँ पे मैंने? क्लास पर्सन ले लिया है। फिर ओरिजिनल क्या लिया? क्लास एम्प्टी है, जिसमें मैंने क्या कर दिया? सिर्फ पास कर दिया उसको। तो पास एक स्टेटमेंट होती है बेसिकली। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास p इक्वल टू पर्सन, और फिर मैंने क्या कर दिया? p डॉट ग्रीट को प्रिंट कर दिया। p डॉट ग्रीट ये वाली को यहाँ पे डिफाइन करा था ना मैंने, ग्रीट, उसको मैंने क्या कर दिया? कॉल कर दिया यहाँ पे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉल मेथड बाई एडिंग डेकोरेटर्स। ठीक है, विच इज़ ईजी। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और भी लिख रखेंगे इसके, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। क्लास डेकोरेटर ये रहा आपके पास। ऑर्डर रजिस्टर सर्विसेज जैसे प्लगइन्स दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल विद कमेंट्स, इधर आ जाओ, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ इसका क्लास डेकोरेटर उसके नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपके पास? इसके बाद इसका भी एक क्या करना पड़ेगा? ये भी क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? फंक्शन। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो ऊपर से उठा सकते हो, बिल्कुल सेम ही है। बस क्या आएगा यहाँ पे? क्लास आ जाएगा, है ना? तो फंक्शन डेकोरेटर में क्या आता है? फंक्शन आता है। तो यहाँ पे डेकोरेटर का फंक्शन डेकोरेटर में क्या आता है? ये आता है आपका एज इट इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन इनपुट। ओके, एंड क्लास डेकोरेटर में क्या आता है? क्लास आता है, बस दैट्स ऑल, एज एन इनपुट। और या फिर एक्सटेंड करता है, फिर मॉडिफाई क्या करता है? उसके ओरिजिनल बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है वो। ठीक है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, मॉडिफाई कर देता है उसके ओरिजिनल बिहेवियर को। अब क्या करते हैं? इस पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है? एक फंक्शन में क्या कर लेता हूँ? बना लेता हूँ यहाँ पे डिफाइन के नाम से, कुछ ऐड ग्रेटिंग्स के नाम से मैं कर लेता हूँ, बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐड ग्रेटिंग के नाम से मैंने बना लिया। अब की बार मैं क्या लेने वाला हूँ? अब की बार क्लास लेने वाला हूँ। तो CLS मैंने ले लिया यहाँ पे, कुछ और भी ले सकते हो आप। ठीक है, एज एन इनपुट के तौर पे। और मुझे क्या करना है अब की बार में कि सेल्फ डॉट जो मेरी क्या रहेगी, एक एट्रीब्यूट में क्या कर रहा हूँ? उसमें ऐड कर रहा हूँ, जैसे ग्रीट के नाम से। ठीक है, एक मेथड में क्या कर रहा हूँ? इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो सेल्फ डॉट ग्रीट के नाम से मैं क्या करता हूँ? इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ डॉट ग्रीट के नाम से मैं क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ? लैम्बडा फंक्शन में यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं करता हूँ सेल्फ को कॉल कर देता हूँ। सेल्फ डॉट ग्रीट और सेल्फ डॉट क्लास ये रहने, एक बार मेरे को चेक कर लेता हूँ सेल्फ डॉट ग्रीट है कि क्लास है। जस्ट अ सेकेंड। तो क्लास डॉट ग्रीट है ना? हाँ, तो सेल्फ नहीं है बस। ठीक है, क्लास डॉट ग्रीट है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? सेल्फ ले लिया है। ठीक है,
फिर इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। इसके अंदर मैं क्या करा सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे क्या करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। cls.create एक फंक्शन मैंने लिया है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, या फिर हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे प्रिंट करके आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसको एज इट इज़। लैम्बडा लिया, सेल्फ लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रिंट करा देता हूँ, जैसे मान लो हेलो फ्रॉम द वर्ल्ड या कुछ भी यहाँ पे डाल दो, हेलो माय नेम इज़ मोहित एम के, ठीक है। क्योंकि नीचे प्रिंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन है मेरा, लैम्बडा फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता लैम्बडा फंक्शन, तो मैंने फंक्शंस वाले टॉपिक के अंदर बता रखा है कि लैम्बडा फंक्शन को कैसे बनाता है। तो ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली, ठीक है। लैम्बडा यहाँ पे फंक्शन नेम किया मैंने ग्रिड के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो माय नेम इज़ मोहितम के मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एडिंग अ न्यू मेथड ग्रीट टू द क्लास, मतलब ये क्या किया है, एक ग्रीट वाली जो मेथड है वो मैंने क्या करी, ऐड करी इस पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है। जो क्या करेगी, इस क्लास को डायनेमिकली बनाने वाली है बेसिकली, ठीक है, बनाने वाली है, राइट। फिर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा इस पर्टिकुलर क्लास को मैं यहीं पे, ठीक है। रिटर्न क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, ग्रेड को मैं सॉरी क्लास को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, जो यहाँ पे मैंने ली थी ना ऊपर, दैट्स ऑल। तो रिटर्निंग द मॉडिफाइड क्लास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्निंग रिटर्निंग द मॉडिफाइड क्लास, ठीक है। और ऊपर मैंने क्या किया है, एक मेथड यहाँ पे ऐड करी है, यहाँ पे मैंने क्या की है, मेथड इज एडेड बेसिकली टू द क्लास, या फिर नेम डाल सकते हो उसमें, ग्रेट नाम के ऐड करी है कि डायनामिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी है, बस दैट्स ऑल। ये आप लिख के छोड़ सकते हो, और मेथड का नाम लिख भी सकते हो, ग्रीट हो गया, कुछ भी XYZ उसमें क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो इसमें, ठीक है। फिर क्या करना है, @ लगाना है अपने, और फिर क्या करना है अपने ये जो फंक्शन का नाम है वहाँ पे डालना है, ठीक है, ऐड ग्रेटिंग। और इसके अंदर फिर क्या करनी है, चीज़ें लिखनी है, क्या करनी है, एक क्लास मुझे क्या करना पड़ेगी बनाने की, कोई भी पर्सन हो गया कि हेलो मोहित या हेलो करके ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ गया, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। तो हेलो पर्सन के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक क्लास में बेसिकली बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हेलो फंक्शन के सॉरी क्लास पर्सन के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक क्लास में क्या कर लेता हूँ, एक बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल क्लास को मैं करता हूँ वहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया इसको, पास वाली स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ऐड ग्रेटिंग के अंदर। और फिर क्या करते हैं, जो जो क्लास मैंने बनाई उसको मुझे क्या देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस मीन्स पर्सन इक्वल्स टू एडिंग पर्सन, क्लास पर्सन लिया और उसने मैंने क्या कर दी, पास कर दी है। फिर p इक्वल्स टू पर्सन, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया है, क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। तो p कर लो या फिर एनी पर्सन कर लो, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू पर्सन, इस वाले मेथड, इस वाली जो क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, एनी पर्सन मिला। और फिर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, कोई भी नाम आएगा मेरे पास तो वो क्या होगा, प्रिंट होकर आएगा, देखो, ठीक है। तो p डॉट ग्रिट वाला क्या है मेरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेथड थी वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी। अब वो p यानी कि वो मेरा एनी पर्सन है, ठीक है। डॉट ग्रिट मेरी क्या है, एक एक मेरी मेथड है बेसिकली, उसको मैं आके पे क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। एनी पर्सन ये किसको रेफर कर रहा है पता है, ये कर रहा है इस क्लास, ये क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ एनी पर्सन, और वो यहाँ पे आ रहा है एज एन क्लास के तौर पे, ठीक है। तो एनी पर्सन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल लूँगा, और डॉट मैं क्या कर दूँगा, ग्रीट कर दूँगा, मैं क्या कर दूँगा, ग्रीट, बस दैट्स ऑल। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करा के देखता हूँ एक बार कि क्या रन हो रहा है, फिर कुछ एरर वगैरह आ रहा है। बाउंड मेथड ऑफ एड ग्रीटिंग, कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, राइट। इसको रिजोल्व करते हैं हम लोग, लेट्स रिजोल्व दिस। क्लास डॉट ग्रेड इक्वल टू लैम्बडा, सेल्फ में मैंने किया था इसको, आई थिंक ये एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है ना, नंबर 1। नंबर 2 ग्रीटिंग के अंडर ही मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इसको क्लास को रिटर्न कर रहा हूँ, नहीं रिटर्न तो इधर ही आएगी, ऐड ग्रीटिंग किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, चलो चेक, लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। लैम्बडा सेल्फ में मैंने डाला था इसको, ठीक है, फिर रिटर्न कर दिया था क्लास को, रिटर्न कर दिया था क्लास को, फिर भी ठीक है, क्योंकि ऐड ग्रीटिंग ऊपर वाले लेवल पे है ना, तो ये मैं क्या करूँ, इसके अंदर रिटर्न नहीं होगा, ये बाहर रिटर्न होगा आई थिंक, या फिर इसके अंदर ही रिटर्न होगा ये, रिटर्न इसके अंदर ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, इसके अंदर ही होगा। फिर मैंने एट द रेट में इसमें ऐड किया पर्सन के नाम से, और फिर मैंने पर्सन डाल दिया है, p इज इक्वल टू पर्सन, मैंने पर्सन डॉट ग्रेट मेथड को मैं यहाँ पे ऐसे कॉल करूँ क्या,
इसके अंदर एक फंक्शन है मेरे पास। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है, अब ठीक है, नाउ इट इज़ राइट। तो हेलो माय नेम इज़ मोहितम क्यों क्या हो रहा है, प्रिंट होके आ रहा है। सो ये मेरी मिस्टेक से, तो मैंने कॉल कर रहा था मैं, तो कॉल करने के टाइम में पैरेंथेसिस मैंने नहीं लगाया था, है ना, एज एन फंक्शन के तौर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी वो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया मेथड को बाय एडिंग अ डेकोरेटर। ये जो मेथड थी वो मैंने ऐड कर दिया, डेकोरेटर ऐड करके मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया बस। तो ऐड ग्रीटिंग क्या है मेरे पास, मतलब ऐड ग्रीटिंग मेरे पास क्या है, एक कुछ ऐसे प्रिंट करेगी पर्सन इक्वल्स टू ऐड ग्रीटिंग, और फिर वो पर्सन नाम जा रहा है वहाँ पे, जो भी आपका पर्सन वहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं जा रहा, ठीक है। बस ये क्या हो गया आपके पास, क्लास डेकोरेटर होगी, क्या होगी, क्लास डेकोरेटर, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्लास डेकोरेटर क्या करती है, क्लास में ऐड करने के, बिहेवियर में ऐड करने का होती है। तो ये क्या है, क्लास की मेथड है, एक फंक्शन होगा मेरा, ठीक है। लेट्स से कि इसको कुछ और तरीके से कराते हैं विद अ डिफरेंट वे, है ना। सेम एग्जांपल को आपको क्या कराना है, कुछ दूसरे तरीके से आपको क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है ना। कैसे करा सकते हो एग्जीक्यूट, लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, टेक सिंपल फंक्शन इन प्लेस ऑफ लैम्बडा फंक्शन, ताकि बहुत सारे लोगों को क्या आता है ना, स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आता है कि एक अरे लैम्बडा वैम्बडा का एक लाइन में इसने क्या लिख दिया है कि कोई समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, आपका एक अलग से फंक्शन बना सकते हो, सेल्फ डिफाइन करके, और रिटर्न कर देते हो वहाँ पे कोई भी नाम हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कर दो, अटैच कर दो उस पर्टिकुलर फंक्शन को इस वाले के साथ में, दैट्स ऑल, ठीक है। एक ऐसे भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एक रेगुलर फंक्शन जो होता है। वॉइस इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। ये वॉइस का पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ग्रिड किया, एक फंक्शन बनाया ग्रिड के नाम से, ठीक है। सेल्फ लिया मैंने, और एक मैं कर रहा हूँ मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ किस ग्रिड वाला फंक्शन, दैट्स ऑल। ये क्या करता है, ऐसे भी वर्क करता है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैं ये लैम्बडा फंक्शन लिया मैंने, और ये एक नॉर्मल रेगुलर फंक्शन ले रहा हूँ, टेकिंग अ रेगुलर फंक्शन। So this time I'll be taking an regular function this time, and let's try to print this self dot greet। रिटर्न कर दिया है, अच्छा रिटर्न में मैंने प्रिंट करा रहा हूँ मैं ना, ग्रीट सेल्फ। ये वर्क तो करना चाहिए फिर भी, हाँ प्रिंट करा, नन आ रहा है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट की जगह रिटर्न करा देता हूँ, इसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिटर्न करा दो सिंपल एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब ठीक है, तो नन नहीं आएगा आपकी बार में, ठीक है। तो ये हेलो माय नेम इज़ मोहितम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सेम आउटपुट आपका प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो ये एक रेगुलर फंक्शन लेके किया है, और नीचे एक मैंने क्या बनाई, मेथड बनाई है, ठीक है। मेथड इज़ एडिंग, तो सेम चीज़ है ना ये। तो दो वर्जन मैंने आपको बता दिए हैं एक सेम चीज़ के, ठीक है। तो ये जो ये वाली जो लाइन थी वो क्या थी, लैम्बडा फंक्शन को यूज़ करके थी। ये वाली क्या है, एक रेगुलर फंक्शन को यूज़ करके थी, ठीक है। बस दैट्स ऑल, इतना डिफरेंस याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये वाली एक लैम्बडा फंक्शन को यूज़ करके थी, एक सिंपल फंक्शन को यूज़ करके थी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एंड ऐड पर्सन क्लास, ये ठीक है, ये हमारी क्लासेस हो गई, जिसको मैंने क्या कर दिया था, पास कर दिया था, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे उसके अंदर डाल दे रहा हूँ, काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपकी क्लास डेकोरेटर हो गया, क्या हो गया, क्लास डेकोरेटर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस में, कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर्स भी आते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। कुछ क्या आते हैं, बिल्ट इन डेकोरेटर्स आते हैं, जैसे एट द रेट स्टैटिक मेथड हो गया, है ना। स्टैटिक मेथड क्या होता है, एक मेथड होता है जो बिलोंग करता है किसको, क्लास को, ठीक है। बट वो उसका इंस्टेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है,
ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास बट दैट डजेंट एक्सेस इंस्टेंस, यानी मतलब सेल्फ को वो एक्सेस नहीं कर सकता है, खुद को वो एक्सेस नहीं कर सकता है, और क्लास डेटा या क्लास डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। देखो, थिंक ऑफ अ कैलकुलेटर इनसाइड अ क्लास, इट डजेंट वर्क बट डजेंट केयर अबाउट हु इज यूजिंग इट, राइट। सो इट्स लाइक कि the calculator is not even working and the person who is using it, the calculator is not taking care of it, like कोई भी मुझे क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस हो गए, हेल्पर फंक्शंस हो गए, है ना। तो यहाँ पे इन यूज़ केस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, एट द रेट स्टैटिक मेथड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या है डेफिनेशन में बता देता हूँ स्टैटिक मेथड की। क्या है मेरे पास, एक मेथड होती है जो बिलोंग करती है किसको, टू अ क्लास। ठीक है, बट डजेंट एक्सेस इंस्टेंट्स, या फिर ऐसा समझते हो कि एक चीज़ है जो वर्क नहीं करती है और उसको कोई यूज़ कर रहा है तो उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर्स के नाम से पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, इसी के अंदर मैं बता देता हूँ बिल्ट इन डेकोरेटर्स। ठीक है, एट द रेट करके मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या करा था, एट द रेट करके जो भी क्लास वगैरह, यहाँ पे देखो फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है ना। तो बिल्ट इन डेकोरेटर्स में एट द रेट स्टैटिक मेथड बताता हूँ मैं पहले, तो एट द रेट स्टैटिक मेथड या स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो ये क्या होती है, फॉर्मेट कर देता हूँ इसको मैं, फॉर्मेट। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास बट डजंट एक्सेस इंस्टेंस, मतलब खुद को क्या कर सकती है वो, एक्सेस नहीं कर सकती है, और क्लास डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब खुद के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, बट हाँ, कौन यूज़ कर रहा है उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होती है आपके पास, स्टैटिक मेथड होती है। क्या होती है, स्टैटिक मेथड होती है। ठीक है, चलो इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, क्लास मैथ के नाम से बनाया है, और उसने क्या दिया, क्लास क्रिएट करी है। ठीक है, फिर क्या किया, एक स्टैटिक मेथड डाली है उसके अंदर, डिक्लेयरिंग स्टैटिक मेथड डिफाइनिंग ऐड ए और बी, उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो नो सेल्फ ए नो सेल्फ बी। ठीक है, और क्लास नीडेड, तो रिटर्न क्या कर दिया डायरेक्टली इसने, ए प्लस बी, मतलब सिंपल रिटर्न क्या कर रहा है, सम रिटर्न कर रहा है। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे, मैथ डॉट ऐड वाला फंक्शन मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैथ डॉट ऐड वाला क्या कर दिया इसने, फंक्शन कॉल कर दिया। देखो यहाँ पे ऐड वाला ये रहा, 3 और 5 इसने क्या कर दी, वैल्यूज दे दी ए और बी की। तो कॉलिंग मेथड डायरेक्टली यूजिंग क्लास, तो क्या कर दी, मेथड क्या कर दी, कॉल कर दिया, किसका यूज़ करके, क्लास का यूज़ करके। स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड तो नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, स्टैटिक मेथड सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं एक मैथ के नाम से। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। फिर क्या करना आपको, एक स्टैटिक मेथड यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, एट द रेट स्टैटिक मेथड यहाँ पे डाल दो यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक मेथड डालने के बाद क्या कर दो, एक फंक्शन बना लो जो क्या करेगा, ऐड करेगा ए और बी। सेल्फ यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, उसको एक्सेस भी नहीं कर सकता, डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी को मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को डाल दे रहा हूँ कहाँ पे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रिंट मैथ डॉट ऐड के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। डायरेक्टली मैं इसको पुटअप कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर आएगा ये, खोला नहीं लगाया मैंने। स्टैटिक मेथड मैंने यूज़ किया, डिक्लेयरिंग स्टैटिक डिफाइन ऐड सम। ठीक है, और ये मुझे इसके अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी। एक लेवल अंदर, और फिर ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी को। फिर मैथ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करा रहा हूँ उस मेथड को, उसके अंदर ऐड वाला कॉल करके उसकी वैल्यूज़ में पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आएंगी ये। अब देखो एक बार रन करा के देखता हूँ मैं कि वर्क करता है ही नहीं करता है। इट इज़ नॉट वर्किंग, क्यों नहीं वर्क कर रहा है वही क्लास मेथड। इनको ऊपर वाले को तो कमेंट कर दो आप लोग। ठीक है, तब तक
ताकि ये रन ना हो, फंक्शन और क्लास डेकोरेटर्स। स्टैटिक मेथड डिफाइन किया हमने, ऐड रिटर्न कर दिया a+b, और प्रिंट में यहाँ पे बाहर करा रहा हूँ। मैथ मैंने ऐसा स्मॉल नाम से देखो यहाँ पे किया है, मैथ का नेम गलत है, तो यहाँ पे मैथ डायरेक्ट डाल दो, मैं डॉट ऐड 3 और 5, ठीक है। फिर क्या कराते हैं, इसको रन करा के देखते हैं, चलो। हाँ अब कर रहा है ये, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है उसको स्टैटिक मेथड में। सॉरी सर अब क्लास नहीं कर पाऊँगा, कुछ काम आ गया है। ओके नो प्रॉब्लम विद दैट हर्षित, यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, मेरे पास क्लास मेथड हो चुका है, ठीक है। क्लास मेथड हो चुका है, किसके अंदर, बिल्ट इन है ये, मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे अलग से, कुछ फंक्शन वगैरह नहीं बनाया, फिर मैंने कुछ क्लास वगैरह नहीं बनाया, तो बस एक मैथ नाम से लिया था। और लेट्स से कि ये क्या कर रहा है, इधर मैं 15 दूंगा तो क्या कर देगा, बस रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखते हैं कुछ इस टाइप से। तो 20 मेरे पास क्या आ चुका है, आउटपुट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो 4 आर वॉचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, राइट। लाइक कर देना वीडियो को। फिर मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। एक बार मैं दोबारा से मैं क्या करता हूँ समझा देता हूँ उसमें कि भाई एक ये जो चीज़ है ना क्लास मेथड, ये एक तरीके से समझो कि ये एक स्कूल का आपके पास क्या है, ऑफिस है, ठीक है। क्या आपके पास ऑफिस है जो क्या करता है, हैंडल करता है आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी क्या होती है चीज़ें होती हैं स्कूल से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या करता है, उसको हैंडल करता है। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को मैं ये हैंडल नहीं कर रहा, मतलब एक इंडिविजुअल क्लास को हैंडल नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है। वैसे और इतनी देर क्लास चलेगी, ये आधा एक घंटा और चलाएंगे, ठीक है। बस ये टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, ये लास्ट है कुछ इसके अंदर डेकोरेटर्स के अंदर कुछ बिल्ट इन, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा प्रोजेक्ट कराने की ट्राई करूँगा, ठीक है। मतलब 10 बजे तक तो चलेगी नो डाउट, 10 बजे तक तो हम लोग इसको रखने वाले हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, स्टैटिक मेथड हो गया, क्या हो गया आपके पास, स्टैटिक मेथड हो गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, यूज़र फैक्ट्री सिस्टम बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, किसका यूज़ करके, स्टैटिक मेथड का यूज़ करके, ठीक है। सॉरी स्टैटिक मेथड का उल्टा बोल दिया क्या मैंने, वो क्लास मेथड का यूज़ करके होगा, ठीक है। तो रुको एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो कैलकुलेटर वाला था वो था, वो मैं किसका एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लास मेथड का यूज़ करके बता रहा हूँ, क्लास मेथड वाले का बता रहा था, ठीक है। तो एक स्कूल ऑफिस है जो हैंडल क्या करता है, रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू द होल स्कूल बट नॉट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया आपकी क्लास मेथड हो गई। तो स्टैटिक मेथड तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की, डिक्लेयर किया स्टैटिक मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे ऐड ए और बी को, और नो सेल्फ और क्लास मैंने यहाँ पे डाली है, कोई नहीं डाली है वहाँ पे, और बस क्या कर दिया, कॉलिंग मेथड डायरेक्टली यूजिंग क्लास, ठीक है। जो भी मेथड थी वो मैंने क्या कर दी, क्लास का यूज़ करके मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुई स्टैटिक मेथड। फिर हम बढ़ते हैं आगे दूसरी वाली मेथड पे, विच इज़ कॉल्ड क्लास मेथड। कौन सी हमारी क्लास, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है हमारी, क्लास मेथड, ठीक है। क्या होती है हमारे पास नेक्स्ट हमारी क्लास मेथड। तो क्लास मेथड इज मेथड दैट टेक्स क्लासेस एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्लासेस क्या होती है, क्लास मेथड क्या होती है बेसिकली, तो एट द रेट क्लास मेथड करके आएगा यहाँ पे, एट द रेट क्लास मेथड डाल देता हूँ मैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अ क्लास मेथड, ठीक है, अ क्लास मेथड इज टेक्स द क्लास और यू कैन से क्लास, ठीक है, एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेगी, और क्या करेगी, काम करेगी, एंड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा, मतलब क्लास लेवल का जो डेटा होगा उसके तक क्या क्या करने वाली है, वर्क करने वाली है, ठीक है। तो जो मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था वो क्लास मेथड का था, ठीक है। मतलब जो स्कूल वाला था वो किसका था, इस क्लास मेथड का था, ना कि स्टैटिक मेथड का, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओ, तो इट हैंडल्स द थिंग्स रिलेटेड थिंग्स ऑफ ए स्कूल ऑफिस, ठीक है। एक स्कूल ऑफिस है, वो क्या करता है, हैंडल करता है थिंग्स को रिलेटेड टू द होल स्कूल, नॉट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को, ठीक है।
तो वही क्या होता है, आपके पास क्लास मेथड होती है, वो क्या करती है पूरे स्कूल का ध्यान रखती है, पूरे स्कूल का क्या करती है ध्यान रखती है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का ध्यान रखती है, एक इंडिविजुअल क्लास का ध्यान रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास क्या है कि मैंने स्टूडेंट नाम से क्या करी है, क्लास क्रिएट करी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है मैंने, स्कूल नेम में मैंने डाल दिया ABC, कोई भी स्कूल डाल दिया, एक वेरिएबल बना लिया, जो कि शेयर बाई ऑल स्कूल करेंगे हम लोग स्कूल नेम। ठीक है, ABC वगैरह कुछ भी। फिर मैंने क्या करा है, एक क्लास मेथड डाली है यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने क्या किया, डिक्लेयरिंग अ क्लास मेथड। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास रिफर्स टू द क्लास। देखो यहाँ पे इस बार मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ किसको, क्लास मेथड को। और क्या कर रही है, रिटर्न क्लास डॉट स्कूल नेम को क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है, मतलब इसको, ये रहा क्लास डॉट स्कूल नेम को, इस वाले वेरिएबल को क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर मेथड। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ किसको, स्टूडेंट वाली क्लास को मैंने डाला, और उसमें डॉट गेट स्कूल नाम से मैंने क्या बना था, एक मैंने क्लास मेथड बनाई थी, वो मैंने डाल दिया, बस सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इस टॉपिक को करने के लिए ना आपको क्लासेस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर मैंने बताया था क्लास कैसे क्रिएट करना है और ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी आपकी तो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, आपको आने वाली है। ठीक है, सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ कुछ, एक क्लास में बना लेता हूँ, किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से मैं करता हूँ क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास क्रिएट किया, सो क्रिएटिंग अ क्लास। देन मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ कि भाई वो जो स्टूडेंट्स है वो किस स्कूल के हैं, राइट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे किस स्कूल के हैं। ठीक है, स्कूल नेम, स्कूल नेम से बना लो या फिर किस नेम से बनाओगे, कुछ भी नाम से बना लो, स्कूल नेम से बना लो। ठीक है, लर्न विद मोहितम के मैंने स्कूल नेम रख दिया है। ठीक है, लर्न विद मोहित मैंने क्या कर दिया, स्कूल नेम मैंने डिफाइन करके रख दिया है। अब ये क्या करना है, एक सिंपल वेरिएबल बनाया है, क्या क्या बनाया मैंने, सिंपल वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वेरिएबल विद स्कूल नेम। ठीक है, वेरिएबल विद स्कूल नेम मैंने क्या कर दिया है, इसको बना के छोड़ दिया है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टैटिक मेथड में क्या करता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे क्लास मेथड में बनाता हूँ, ये रहा क्लास मेथड। ठीक है, अब इस क्लास मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिफाइन करता हूँ एक मेथड। ठीक है, एक क्लास मेथड में लेता हूँ। ठीक है, क्लास मेथड में लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसके नाम से, किसके नाम से लेंगे हम लोग, लेट्स से डिफाइन कर देते हैं हम लोग, क्या करना है, स्कूल का नेम हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो गेट स्कूल नाम से करते, गेट स्कूल नेम नाम से मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कि भाई स्कूल का नाम मुझे चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लास को ले सकता हूँ एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया CLS। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ऊपर मैं नहीं ले पा रहा था, यहाँ पे देखो मैंने कुछ A और B बस एक नॉर्मल क्या किया था, कुछ पास किया था, पैरामीटर पास किया था मैंने, सेल्फ को नहीं किया था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ किसको, क्लास को एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा, मतलब इसके लेवल तक का डेटा को मैं कह सकता हूँ वर्क करता हूँ। जैसे ये होगा स्कूल नेम एक्सेस कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर CLS डॉट स्कूल नेम में डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्या डाल दूंगा, ये स्कूल नेम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये देखो कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्या एक्सेस कराना है, बेसिकली क्या कराना है, क्या एक्सेस कराना है मेरे को, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर देने वाला हूँ। ठीक है, क्या कर देने वाला हूँ, प्रिंट कर देगा, इसको मैं रिटर्न करा दो, यहाँ पे क्या करा दो, रिटर्न करा दो, क्या CLS डॉट स्कूल नेम को क्या कर देगा, वो रिटर्न करा देगा, बस दैट्स ऑल। फिर नीचे जाके प्रिंट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, नीचे जाके प्रिंट कर दो, तो ये क्लास हो गई पूरा, ये क्या हो गई, पूरी क्लास हो चुकी है। ठीक है, और नीचे जाके बस प्रिंटिंग का काम बाकी है मेरा, तो प्रिंट क्या कर दो, किसको करोगे प्रिंट, तो मैंने क्लास का नाम लिया था, क्लास का नाम क्या था, मेरा स्टूडेंट नाम था, ये कुछ इस टाइप से। अब उसके अंदर एक मैंने मेथड ली थी, कौन सी मेथड ली थी, क्लास नहीं, ये रही थी, गेट स्कूल नाम से मैंने मेथड ली थी, तो मैं यहाँ पे डेट डॉट लगा दूंगा इसका कि, और गेट स्कूल नेम से जो मेथड ली थी मैंने यहाँ पे, वो मैं प्रिंट कर दूंगा, बस ऐसे, दैट्स ऑल। इसको एक बार रन करा के देखता हूँ मैं, एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, हाँ ये कर रहा है, देखो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, स्कूल नेम प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, जो कि मैंने क्या लिया था, इस वेरिएबल के तौर पे लिया था। ठीक है, ए और बी तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि और भी मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, देखो यहाँ पे A, B ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना। और रिटर्न के साथ में मैं क्या करा देता हूँ, प्लस में रिटर्न के साथ में मैं करा देता हूँ A + B। ठीक है, और स्कूल नेम तो ले रहा था इस टाइप से, जो मैंने पास कर दिया ऊपर वेरिएबल के तौर पे, और या फिर अलग से भी ले सकते हो इसमें, है ना, कि CLS डॉट A और B
या तो मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक बार मैं इसको रन करा के देखता हूँ, एक सेकंड रुको, जस्ट अ सेकंड। 15 और 10 का लेगा, हाँ लेगा, तो ठीक है। तो दोनों वर्क कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड में क्या था कि सिंपल ए और बी को मैं ले रहा था यहाँ पे। इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, एक एक किसको ले रहा हूँ, क्लास को भी ले सकता हूँ यहाँ पे, देखो खुद को, सेल्फ को भी ले लेता है यहाँ पे। तो ऊपर अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो स्टैटिक मेथड में क्या था, स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू द क्लास बट डजंट एक्सेस इट्स ओन डेटा, या फिर इट्स डजंट एक्सेस इंस्टेंट और क्लास डेटा। बट यहाँ पे हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं, क्लास लेवल डेटा तक का हम ले सकते हैं। अब क्लास लेवल में मैंने ये देखो एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, तो उसके अंदर मैंने क्या था, एक वेरिएबल बनाया था, तो इसको मैं बाहर से एक्सेस करके लेके आ सकता हूँ। अगर आप ऊपर यूज़ करने की कोशिश करोगे स्टैटिक मेथड में, जैसे मैं स्टैटिक मेथड में सेम काम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया यहाँ पे क्लास, और ऊपर मैं करता हूँ वेरिएबल बना लेता हूँ एक, है ना, क्लास के अंदर किस नाम से, एनी नेम नाम से बना लेता हूँ मैं, ठीक है, एनी नेम के नाम से बना लेता हूँ। मोहित नाम बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मोहित नाम मैंने बना लिया। किसमें, स्टैटिक मेथड में ट्राई कर रहे हैं सेम चीज़, ठीक है। फिर मैं सी एल एस डॉट क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ, सी एल एस डॉट एनी नेम में ट्राई करता हूँ, ठीक है। एनी नेम में क्या करता हूँ, ट्राई, देखो मेरे पास क्या आ गया, ओके, कॉमा नहीं लगाया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये स्टिल अभी क्या दिखा दे, इसका नाम ही पूरा अलग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं इसको क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ, ठीक है। क्या है, ये मेरी स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड में क्या है, एरर आ चुका है मेरे पास, देखो, ठीक है, क्या आ चुका है, एरर आ चुका है, ठीक है। ये एरर आ गया मेरे पास, क्यों, क्योंकि मैं इसके खुद के डेटा को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, इसके क्लास का जो डेटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ मैं किसके अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर। बट सेम काम मैं किसके अंदर कर सकता हूँ, क्लास मेथड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली कर सकता हूँ वो वाली चीज़, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल बता रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो क्लास मेथड यहाँ से हटाओ, क्लास डॉट एनी नेम भी हटा दो यहाँ से, ठीक है, और एनी नेम वाला एक वेरिएबल मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से समझो कि ऐसा कैलकुलेटर है जो काम तो नहीं करता है, बट जो इसको यूज़ करता है उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन इसको यूज़ कर रहा है, दैट्स ऑल, सिंपल रखो इस चीज़ को। ये क्या है, इसका मैंने एक एग्जाम्पल बता डाल रखा है ऑलरेडी, कि ये एक ऐसे स्कूल का ऑफिस है जो क्या करता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को मैनेज नहीं करता है, राइट, क्या करता है, पूरे स्कूल की प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, ठीक है। क्या करता है, पूरे स्कूल्स को की प्रॉब्लम को हैंडल करता है कौन, क्लास मेथड। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम तो ये सोल्व कर ही रहा है, और बी को ये बाहर से भी ले आया है, क्लास लेवल की चीज़ें यहाँ पे देखो, स्कूल नेम में लिखा था ना, वो क्लास के अंडर में है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि भाई ये वो वाली चीज़ें भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्लास मेथड हो चुकी है, क्या हो चुकी है, क्लास मेथड हो चुकी है। जिसको नहीं पता क्लास मेथड क्या होती है, वो इस वाले टॉपिक को देखो और आप इजीली क्या कर सकोगे, इस चीज़ को समझ जाओगे कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है। पाइथन के अंदर ये वाला टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोज आर वॉचिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्ट्रीम को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, स्टैटिक मेथड पढ़ लिया, ठीक है, और क्लास मेथड पढ़ लिया, और इनके बीच का डिफरेंस हमने जान लिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट आए आपको तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन जस्ट मेंशन इन द चैट दैट वॉट एवर डाउट यू हैव, ठीक है। तो वहाँ पे काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, @ प्रॉपर्टी। वैसे तो क्लास और यही थी हमारे पास, क्या थी, मैंने कौन कौन सी थी हमारे पास, आज हम कौन सी चलते हैं, तो स्टैटिक और क्लास मेथड मैंने डाल रखी थी थंबनेल के अंदर। चलो और भी मैं बता देता हूँ एक आधी मेथड बिल्ट इन, ठीक है। जैसे @ प्रॉपर्टी क्या करती है, @ प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन डेकोरेटर्स होते हैं, बिल्ट इन डेकोरेटर्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बिल्ट इन डेकोरेटर्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इज अ मेथड टू एक्सेस लाइक एन एट्रीब्यूट, इज अ मेथड टू एक्सेस लाइक एन, तो डेकोरेटर क्या करता है, @ प्रॉपर डेकोरेटर क्या करता, क्या है भाई, इज अ डेकोरेटर दैट अलाउस अ मेथड टू बी एक्सेस लाइक एन एट्रीब्यूट, एक मेथड को एक्सेस कर सकते हो एक एट्रीब्यूट के तरीके से। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, देखो, थिंक ऑफ ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। थिंक ऑफ अ स्पीडोमीटर, यू डोंट कॉल अ फंक्शन टू गेट स्पीड, फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसकी करने के लिए, स्पीड को जाने के लिए। यू जस्ट नीड टू एक्सेस इट्स लाइक अ वैल्यू, यू जस्ट एक्सेस इट लाइक अ वैल्यू, बस उसको क्या कर दो, एक्सेस कर दो कि भाई कितनी स्पीड है एज एन वैल्यू के तौर पे, दैट्स ऑल। अब यूज़ केस कहाँ पे आता है दैट प्रॉपर्टी का, डेटा हाइडिंग में काम आता है,
जहाँ पे आपका क्या हो, रीड ओनली एट्रीब्यूट्स हो, सिर्फ क्या कर सकता है यूजर, रीड कर सकता है, कुछ कंप्यूटेड वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम बनाओगे आप, बैलेंस प्रॉपर्टी हो, मतलब कुछ बैलेंस रुपीज़ इतने बचे हुए हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हो। एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम्स बनाने में इसका क्या होता है, यूज़ होता है। रोहित पटोला, what it is like, keep saying repeatedly. What is this? What is Tikkun you keep saying repeatedly? I also forgot that. If you can remind me one more time, Emmanuel, so that I can proceed with that. Okay. What was that? I don't know what was the exact word. I think yeah, this was the line. You just need to access it like a value. uh, anyways. You are back again, Emmanuel. Welcome to the stream again, brother. Okay, and soon we are going to start with JavaScript in one stack series. Okay, okay. Soon I think you're waiting for JavaScript series to be started, right? Just after finishing the CSS, I'll directly jump to the one of its framework. You look like Rahman Daket. Okay, brother. Thank you so much. Welcome to the stream. Dakets. सीरियसली रहमान डकैत तो नहीं यार, कुछ और बता भाई, कुछ और बता। सही में रखता हूँ क्या रहमान डकैत? सो रहमान डकैत इज एन villain in a movie. I never left, and I'm watching. Yes, I'm waiting for JavaScript. Oh, that's great. That's great, Emmanuel. We'll start soon. Let me check where we're in the CSS right now, and I just let you know let you know the exact date or exact day where when we will be starting the JavaScript part. Let me go to the Monstack course series. Burandar. तो ये हमारा कौन सा था आज, डे 6, डे 5 वो ना, डे 6 ये रहा ना, डे 6 था ना। डे 6 के अंदर हमने क्या पढ़ा था आज? टिल आई थिंक लेआउट वी वर ऑन द फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, वी वर देयर इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. ओके, IST, Indian Standard Timings. From which country you are, Emmanuel? I just forgot that. And what is the time right now there? Can you just let me know what is the exact time there? I think you are from Netherlands or somewhere else. You once told the country name. I just forgot. It just gets slipped out of my mind. Anyways, let's wrap this particular topic. Then we will discuss a bit. Okay. So at that property will at that decorator will allow a method to access like an attribute. See, self radius. So self dot radius equals to radius, sorting radius of an object. And what is the topic? It is written like pi value into self dot radius. So circle equal to 5, creating an object with a radius 5. Nigeria, and the time is 5:10. Okay, 5:10 p.m. right? 5:10 p.m. Nigeria. 5:10. Okay, p.m. Nice. India, it's like 9:40 right now. 9:40. So you are like 4 to 5 hours behind Indian Standard Timings. Hmm. Okay, so CSS will be wrapped in like most probably 3 to 4 days maximum,
and 2 to 3 days for the framework. Hyderabad gang, Rohit Patolia. Okay, nice. What I was saying? What I was saying? So 3 to 4 days for completing CSS and 2 to 3 days for completing its framework like Tailwind or Bootstrap. So most probably after a week or 10 days, we'll be starting JavaScript for sure, right? So most probably, if I'm not wrong, in next week I'll be starting JavaScript. By the end of next week, most probably, I'll try. Today is Thursday, I guess, or Wednesday. Today is Wednesday. Most probably next week, by the end of the next week, tomorrow, by the end of next week, we'll be starting with JavaScript for sure. My aim is to start the JavaScript till the end of next week. Okay. And those who haven't subscribed yet, please make sure to subscribe the channel and like the video. So let's coming back to the topic again. So you can access it like an value. You just do not need to call the function again for measuring the exact speed of your vehicle. So you can just access it like an attribute. You can access it like an attribute. So making a method behave like an attribute. So I have made a method here, define area. Self is defined here. No need to call as a function. Okay. We are just directly return the 3.14, which is a pi value, into self dot radius. What is a self dot radius? Equals to radius is a constructor method. Okay, which is defined under init. So you need to take a class first. You need to take two parameters, self and radius. Okay, and this is a simple basic example, man. Not that much interesting. Let me complete it quickly. And the right property method. Yeah, you can say decorator. Allows you to access you to access. Bro, I mean BTech first year. Can you explain me list comprehension Python? That part is already completed, brother. But I will quickly explain that after completing this particular topic. List comprehension is already covered up. Okay, access allows you to access. Allows you to access what property access like an attribute. You can allows method to access like an attribute. Okay, I'll just write down quickly. Method to access like an attribute. So this is definition for you. Let me write down it. So first of all, I'll be calling I'll be making a class first of all, right, with the name of like circle. Okay, let's make a class with the name circle first. And after making the class, what you need to do is you need to use a constructor method, right? Constructor method. So you need to use init method. And there you need to take two things. One is self and one is method. One is radius, you can say that. Okay. And inside it, what you need to do is you need to call self.radius equals to radius. It's an attribute where you are storing the value of radius. Okay. So it's like sorting radius in an object basically. Okay. And then after you can just call this particular, so okay, call this particular decorator at the right property just here. Okay, just here where you are the below define here, just below to it. Okay, and after that what you need to do is, so you are using a method which like behave like an attribute. एक ऐसी method हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं जो क्या करेगी, behave करेगी एक एट्रीब्यूट के जैसे. ठीक है, एक एट्रीब्यूट के जैसे. फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन कर लेता हूँ मैं कि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर सर्कल का. ठीक है, तो वहाँ पे सेल्फ डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका मतलब सेल्फ डॉट यूज़ करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ क्या 3.14 इंटू सेल्फ डॉट रेडियस. जो ऊपर मैंने क्या किया था, डिफाइन किया था. क्या किया था मैंने, डिफाइन किया था. ये देखो यहाँ पे. ठीक है, अब इसके अंदर से रेडियस की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास में सेल्फ डॉट रेडियस के अंदर से, और इसकी सेल्फ डॉट रेडियस इंटू सेल्फ डॉट रेडियस 3.4 इंटू सेल्फ डॉट रेडियस. यहाँ पे डाल दो सेल्फ डॉट रेडियस. क्या कर दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मैं एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा. बेसिकली क्या कर पाऊंगा, एक एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा. ठीक है, तो लेट्स से कि हम क्या करते हैं अभी, नेक्स्ट पार्ट इज
इसको मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डालता हूँ, किसको, इस क्लास को, ठीक है। मैंने इसी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और फिर मैं क्या करता हूँ, उसको सर्कल को कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं डालता हूँ कि मुझे 5 बताओ भाई। तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बेसिकली विद radius value called 5. That's all, simple as that. There is something on your chin. Are you sure? No, your voice is come now. अभी आएगी voice. Are you a girl? I don't think so. What is the meaning of this, Emmanuel? Gal means, bro, you are muted. I know that. I know that. I just fixed it right now, and I was reading your comments. So Emmanuel is saying that, Rohit Patola, are you a gal? So what is that? Okay, so right now after this we need to print what we need to print, the method basically, right? What is the area, ये रहा मेरा, ठीक है। तो एरिया में डाल दूंगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डाला था, तो सी डॉट एरिया में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ एरिया को, ठीक है। जस्ट लाइक एन एट्रीब्यूट, नोट लाइक सी डॉट एरिया करके मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 78.5 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक वॉइस इज कमिंग, जस्ट कन्फर्म मी ऑन द स्ट्रीम राइट नाउ, ठीक है, बोथ ऑफ यू गाइज, दोज हु आर वॉचिंग। Why will a guy be telling a guy that he is cute? I don't know, man. I also don't know. But he finds something. Maybe he's telling in a sarcasm way. Not that mean. Okay. So we have find out here area. So I'm accessing it's like an attribute value, not like this. Okay. Not as a method, but I'm using I'm accessing like an attribute c dot area. Okay. C dot area. C is my brosip. Brosip. Okay. Taking all the positive guys. Okay. So let me give you some another example of this method. Relevant to this. So this time you both a getter and setter, so you can see how it becomes more useful in scenarios. अभी हमने ये नहीं करा getters and setters. Dimensions को भी print कर देगा ये. Area is read only, like a circle example. Anyways,
anyways, so rectangle का find out करना है. Are you really from Nigeria? Emmanuel Samuel. Yes, he is from Nigeria, and he can also give you what he can also give you the proof. What proof Emmanuel can give right now at the moment that he belongs to Nigeria? Emmanuel, anything from you? Onto you right now. So he wants some confirmation that you are from Nigeria. Anyway, so this is called at that property method, which is like built-in. So where were we? Iterators and decorators are also completed. Regular expressor will cover in next class. Let's do some projects. Yeah, I'm from Nigeria. 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 Class decorator. Large file reader. Large file reader. Generator based. No, I don't want generator based. I want decorator based. Authentication system decorator based. So this is a good project to complete. Restrict access to functions like login required to wrap logic around functions clean and reusable. Implementation usage. Let's say login equals to false by default. Define login required function args if not login please login first. Return कर देगा यहाँ पे रिटर्न रैपर का यूज़ करके. ठीक है, तो जेंगो फ्लास्क का इसमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा. So we'll cover up these things when we will we'll start with the Django thing. you know that will be very helpful for us to integrate these topics into a full stack project using Django and SQL. Okay, data pipeline generator decorator combo. So right now we have just completed with the understanding of these 2-3 topics. Most probably only one topic, decorators, the class decorator and the function decorator, and some built-in. Like, sorry, Manuel, just for fun. Cool, man. If you have one. Are you from Nigeria? Yeah, I'm from Nigeria. Sorry, Manuel, just for fun. If you are the one. That's great. What's going on? I think it's coming right now. So I was telling that I'm eagerly waiting to start with the JavaScript part so that we will be getting more cool chats from Emmanuel. So if I need to write a summary of today's topic, or else would be like or else today's concept, which is decorator, is class decorator. Let's say 3 dashes
and I'll be writing here. So what are function decorators? Function decorators basically wraps a function with extra functionalities, you can say, or you can also say extra features. So these are called your function decorators. Okay, if you want to know what are function decorators, basically it wraps a function with extra features. That's all. Another one, what is a class decorator? If anybody asks you what is a class decorator, okay, class decorator basically adds or modifies the class behavior. That's all. And I have already given you the example above. And what does basically static method does? Built-in methods. Built-in methods. Number one, what does static method do? Static method do. What does class method do? And what does property method or else property decorator will do? Okay. So the static method is an like utility function. Utility function. Utility function inside the class. I am a new subscriber of yours. You can introduce yourself. Okay, okay. Let me introduce me to Rohit. That my name is Mohit, and we are currently doing a Python series on YouTube, and we are learning decorators right now. And two of my friends are fighting in chats. You India too? Yes, he's from India. He's from Hyderabad, I guess. ये धुरंधर का डायलॉग क्यों मार रहा है तू? क्या हो गया है तुझे? Yes, I am Indian. So class method, what will do? Class method works with class data. Okay, in a summary. And what does property decorator will do? It's a method basically use like methods use like variable. So in property method, you can use method like variable. Or nice, continue the class. Or nice, sir, continue the class. So this is like summary of today of decorators. So I will give you a summary every day after completing some of the topics. Okay. What else? चलो और कुछ पढ़ना है तो बताओ इसके अलावा, फिर हम लोग करते हैं डिस्कस आगे. इसके प्रोजेक्ट्स तो हम लोग आगे करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में. अगर कुछ और पढ़ना हो तो जस्ट लेट मी नो. इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट पाइथन और इन पाइथन एनी टॉपिक, यू आर आस्किंग सम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, राइट? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यू आर आस्किंग. सो क्विकली बता देता हूँ एक बार मैं. रिएक्ट नहीं, इन पाइथन. Anything you will say, I'll say as soon as possible, bro. Your message enters after late. All what time live will end? At what time live will end? In some time, most probably in half an hour, or else at till 11 I will end. 11 is the last. So basic syntax of the list comparison is this: expression for item in iterable if conditions, if you have any. Okay, let's say if you want to find out the squares of any number, so you can just take an empty list and you need to take a loop for I in range method, let's say 5, and squares dot append method you need to use, and just you can print. So using list comparison you can write like this.
दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. प्लीज कंटिन्यू टिल नेट नाइट. आई कैन नॉट स्लीप. I think you need to come and you need to behave a little bit here. Please do not cross the line, Rohit. जोक्स को जोक्स की तरह लेंगे, बेटा ज़्यादा करोगे तो ब्लॉक मार दूंगा. ठीक है, एक दो बार होता है, इग्नोर कर दिया जाता है. Not make me serious, brother. If I am good, then I am good only. Anyways, we can continue with the manual. Do not drag my name here with this type of things. सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टेप्स आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो बस, दैट्स ऑल. एक वेरिएबल में डाल के एक ही एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. ठीक है. आई एन टू आई फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे लूप डाल दिया आपने और फिर क्या कर दिया, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने डाल दी है, दैट्स ऑल. और फिर क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया स्क्वायर्स को. ठीक है, बस कुछ नहीं था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में. तो एक प्रोजेक्ट ले लो कि आपको क्या करना है, स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं. सॉरी सर. दैट्स ग्रेट. I am happy to lose one subscriber, but not ready to accept this type of things. Make sure to remember from next time. Anyone told me that I need to respond. You don't need to respond to anyone, bro. You just need to learn things. You need to focus on whatever you are doing. There is no way, no need of this type of things. Okay, just delete your comments of this type, like whatever you are writing now in the comments, just delete all those comments. He is from Nigeria, just सरकेज़म में बोल रहा होगा मे बी वो. ठीक है, सो डिलीट डिलीट कर दो ये सारे कमेंट्स जो भी अभी कर रहे हैं ना, ये सारे कमेंट्स मेरी चैट में से डिलीट कर देना प्लीज़. जो फालतू फालतू के है ना, जस्ट रिमूव ऑल दोज कमेंट्स. कुछ अच्छा पूछो यार, कुछ अच्छा डिस्कशन करते हैं, कुछ अच्छा चीज़ें करते हैं. क्या हम चीज़ों में पढ़ने लग गए. और क्या. Manual, just he was joking at that time. Okay, just let's change the topic, man. Just focus on the stream. Do not fight. Do not do a cat fight on the chat right now. Okay. What else you want to ask? You can ask me regarding the course and regarding the things. He was just kidding. Anyways, guys, change the topic. I'm not studying AI/ML. What skills do I need to be perfect?
Are you in website development? No. If you are in website development, you can also with AI ML. You can proceed with web development. Okay. You can do web development with the Python stack or PHP stack or Mun stack. Skills basically you can I will prefer you 2 3 skills as of now. One is full stack web development in one of the stacks like Mun stack or all these Mun stack. Yeah, fair. You can do PHP stack. Either you can do Python stack. Not web development, artificial intelligence, and machine learning. Okay. Then after second is digital marketing. This one is also popular. Inside it, SEO, Google Ads, and key performance marketing. Okay, Google Ads, Meta Ads, social media content creation, social media organic part. You can, if you want to, if you have interest in running ads, so you can prefer with the digital marketing. Either you can learn video editing, and you can start content creation, or else you can do this thing as a job also, as a job or freelance. Okay, this skill will be with you till the end, right? Whatever you are doing, if you are doing a digital marketing, you can use yourself as a video editor for editing your digital marketing videos or website development videos. Okay, so video editing helps in every field. Digital marketing will market your things. Okay, let's say if you are a website developer and if you know digital marketing, you can just build your website and you can add your you can add runs on your website, and you can add runs on social media. You are selling course. I mean, are these enough for good placement? Yes, obviously, man. Other than AI, ML, and data science related things, no, this will help you in good placements. If you want to go like, if you want to use your brain, if you are good in logic building and coding and programming, I would suggest you to go to the coding part. Okay, if you are interested in coding things, you can go to AI ML or Python stack or whatever things you are going. And if you are a business minded person, then go with this thing. If you are thinking to in future you are thinking to run your own business, or if you want to make ads for your clients, or whatever the things related to business, you can go with the digital marketing. And if you want if you want to do content creation part, you can just learn video editing, right? So these are the some basics skills that every person must have. This will help you in whatever you are doing. These things will help you for sure. In IT, I'm telling you. Okay, other than website development or AI ML, you can just prefer these two things. And if you ask me, to pick one thing, I would suggest, if you are a business minded person, right, just go with the digital marketing. Like digital marketing, and learn how to create Google Ads, learn how to do SEO of your website, learn how to run ads on Meta, on Facebook and Instagram to generate leads for your business. Right? If you are interested in generating leads and sales for any business, for any business digitally, okay, by using digital channels like Google, social media, mobile applications, etc. So if you want, I'm not interested in coding and other stuff. Okay, just ignore that part now. So in digital marketing, no coding is required, brother. Okay, you just need to render a little bit.
Okay, so you can learn digital marketing. And I also teaches digital marketing in personal. If you want to learn, you can just let me know. I'll give you some personal sessions, some personal paid sessions. If you want to learn, just let me know. Video editing, one of my friend, one of my colleague, yeah, or else you can say one of my known person teaches video editing. He is a great teacher. Just let me know if you want some personal sessions from him. I will arrange a meeting with you to him. Okay, so you can, if you want to learn anything, just let me know. You are in BTech first year right now, no? Yeah, I would prefer go with the digital marketing thing, right? This will help you in any business to market, right? हर एक बिजनेस को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, कोई भी हो, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन को भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है. सो दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर. Digital marketing plus video editing, go with both of them if you can do both of these. Yes sir, first year. You still have some time. You even can learn these three things: digital marketing, video editing, and website development. But if you are confused, Vignam University Hyderabad, okay. So if you're confused like what to choose between these three or 4 to 5 stacks, yeah, 4 to 5 things, you can first priority go with digital marketing. Second is video editing. Okay, second is video editing. And if you want, this is the, if you want to go to some other department, other department, like if you want to go in sales, so that's a different thing. Okay, you can also go to a sales HR department, which is some irrelevant to you as of now. Okay, so you can also search for these things, right? Salesperson earns good in the beginning also. Okay. The voice is here. Okay. So I was telling you to pick one skill and just continue your career in that particular skill until you make money from it. Okay. So these are the operations team thing. Hey, my name is Rohit True, Rohit Takati.
Hey Rohit Dakati, welcome to the stream, brother. And make sure to subscribe the channel if you haven't subscribed and like the video. If you do have any questions regarding your what skills to be updated or what you need to do according to whatever you're doing right now, just let me know in the comments, and I'll try to put my suggestion out there, and will try to help you anyhow, right, to solve your problem. I think Emmanuel is gone. Hi Emmanuel, are you there? रोहित डकाती क्या करते हो ब्रदर? आज हमने वैसे पढ़ा है डेकोरेटर्स को, ठीक है, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं किसको, रेगुलर एक्सप्रेशंस वाले टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं. डेकोरेटर्स एग्जाम्पल और एल्स प्रोजेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट. Function execution timer, which I already have completed. Login required. Decorator. I'm here. Engineering. Okay. Mechanical or computer. So you can make login required decorator. You can make a function execution time decorator. You can make even input validation decorator. Sanskaram University Delhi. Okay. Input validation decorator. So negative value not allowed. If anybody puts negative value -3 squares. Okay. So this is a good project. CSC. Okay. Computer science. Check if input is positive. Let's test these projects. Number one is function execution timer. We already have discussed the syntax for projects. Projects. Function execution timer. Execution timer.py. Sleep method it is using at that timer. Okay. Import time, so it's importing a module, built-in module. Ask serials. I think we have converted in that negative values are not allowed. Let's try to run this particular project. Just paste it here. Hi Rohit Dakati. It's working for 2 seconds. Execution time means if you want to count like how much time it is taking to execute your Python code or to execute, let's quickly wait for 2.011 second this time. Okay, so sleep for 2, I'll just say sleep for 1 second. Okay, see you later. Okay bro, see you later. See ya. So this is one of its projects. Okay, the syntax is same. It is using a time module, built-in module. Next is login required decorator. So you need to, it will print like first login, if statement, else statement, login required. Simple thing. Login
required decorator dot py. फर्स्ट इट इज़ लाइक लॉगिन फॉल्स कर दिया इसने, एंड उसके बाद फंक्शन एज एन लिया है, ठीक है, एज एन पैरामीटर, एंड रैपर नॉट लॉग्ड इन करेगा तो फर्स्ट, एल्स में फंक्शन कॉल कर दिया है तो वेलकम तो पहले ये करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न फंक्शन कर दिया। एक चीज़ और प्रिंट कर सकता था ये क्या, कि लॉगिन फिनिश्ड लास्ट में जाके, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, प्रिंट कर रहा है ये, सही है। अगर ये ट्रू हो जाएगा लॉगिन की वैल्यू, मतलब इफ़ दैट पर्सन इज़ लॉग्ड इन, देन क्या आएगा मेरे पास, वेलकम टू द डैशबोर्ड, इट्स वर्किंग गुड। So this is static as of now. We need to connect with the database and other things by input validation decorator. Check if input is positive or negative. Okay. Input validation decorator dot py. तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ एक्स इज लेस देन 0 प्रिंट नेगेटिव नॉट अलाउड, सो एक्स इज स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3, so it will print not allowed negative. Okay, so at the first time it was using 5 into 5 squares, and if I will use like 0, not anything. If I will use like 15, so 15 into 15, no output. If I will just comment it and just 225, it's working now. तो नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड। फिर क्या है, और इसमें लॉगिन डिटेक्टर है एक, इसमें प्रिंट फंक्शन नेम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या, आर्ग्यूमेंट्स लोग करके रहा फंक्शन, ये भी फंक्शन डेकोरेटर ही यूज़ कर रहा है यहाँ पे भी, और रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली ए प्लस बी को, ठीक है। और ट्राई डेकोरेटर, कैसे डेकोरेटर, let's try the one more login decorator, login decorator dot py। थ्री और प्लस 7 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, यहाँ पे कॉल कर रहा है इसको एज एन डेकोरेटर्स के तौर पे, ठीक है। सो दीज आर जस्ट फॉर चेकिंग द प्रोजेक्ट नेम्स ओनली। The main thing is this. Projects we can build after completing these topics. You are ready to build real structure project, not just small project. Also just project that naturally use multiple concepts together to learn, like CLI, to-do list. Simple banking system we can build, encapsulation, file handling, exception handling. Student management system we can also build, password generator, quick quiz game app, file organizer, concepts used in file handling.
Contact book dictionaries, oops handling, like add, delete, search, contact, URL shortener. URL shortener is done. Expense tracker, contact book, file organizer, password generator. CLI to do list dictionaries, file handling. Save task in .txt or JSON file, marks task as incomplete. Let's try this one in a file. Complete code. JSON and OS task.json is my file name. Main menu is print to do list, view task, add task, update, delete, mark, complete. And according to it's like he's making update. We can, after these topics, can we start with Django and SQL to come in web development. You're absolutely ready to start Django plus SQL after this level. In fact, this is a perfect transition point, but don't jump blindly. Here is the right mode roadmap so you don't struggle later. Before Django, very important, make sure to, if you are comfortable with functions and hooks, file handling you are already using to-do list app. Basic CLI project. One small addition is learn basic SQL first. Okay. So the step is to learn SQL first. Now let's make SQL syllabus here. So we are ready to focus on select update in these queries where join, very important, letter, primary key, foreign key, use MySQL or SQLite. Simpler Django user by default. SQLite use नहीं करेंगे हम लोग. We will use MySQL only. ठीक है. Start with the Django. Create project and app, understood folder structure, use Django. Core concept is like models, views or templates like HTML. This is called MVT, model view template. So we can start with the Django in some time to complete build some project. Beginner Django projects to do web app. Upgrade your CLI app via browser, store in database, mark complete. Blog website, you can create post, edit post, admin panel or something like that. Student management system, which is great. Login system. Jump into them without SQL basics. Skip understanding models. Copy paste tutorials. Do small projects, break them and fix them. Understand each step. Reality check. At your level, you are ready for Django basics. You are not yet ready for advanced backend like APIs or scaling. That comes later. I already have completed this thing, brother. Best next move. Learn SQL 2 to 3 days. Start Django basics. So after that we can start with the SQL part in the series. Build to do web app, your first full stack project. I'll give you a complete Django roadmap 0 to job ready. Make SQL syllabus from beginner to intermediate to advanced in 3 levels for web development using Django.
this will be for you guys. टेबल बना दिए इसने, सब क्वेरीज बना दिए इसने, ठीक है, ये भी ठीक है, विंडो फंक्शन भी डाल दिया, व्यूज भी डाल रखे हैं, स्टोर प्रोसीजर्स, यूजेबल एसक्यूएल लॉजिक, ट्रिगर्स, scaling concept, web dev focus, what actually matters the most. If your goal is Django backend, focus on master CRUD, join relationship, foreign keys, group by, good to know transactions, subqueries, basics, optimization. Focus more on CRUD, joins, relationships. Okay, anyways, let's wrap this particular session. And those who are watching, thank you so much for watching, guys, till now. So we already have completed today's topic, and we were searching for something else. Make sure to subscribe the channel if you haven't, and like the video. And after this, after some time, we'll be starting with the SQL and Django to, to complete full stack projects. Okay. We already are learning one stack. We already are on a series one stack. So if you want to learn front end part, you can also learn from there. Front end, learn with Mohitmk. You just come here, go to the playlist, and one stack course 2026. You can just read this. If you want to learn HTML, if you want to learn CSS, you can just learn from here. Okay. So this will help you to guide to the front end part, and back end in Python we are learning. And after in this series only, Monstack series, we will be learning Node, Express, and everything here. Okay. So all these things are free of cost for you guys. You just need to be with me till the end, and I am sure that we will be ending by completing some three to four major products in Python, and three to four major projects on the Monstack part. Okay. So I'm wrapping the series, wrapping the live of today with this. Also provide Django. So let's also syllabus in this blueprint. Beginner, advanced. So
Google's cloud span Light, Oracle, Miracle, Redis, MongoDB, Cassandra, Redis, CouchDB, DynamoDB, HBase, Neo4j, Firebase, Firestore, Amazon Document DB. I can also shortlist only top three. Yes, top three. Postgres, best for web development, Django plus production. MySQL, most widely used, beginner friendly. Default in Django, great for learning. Top 3 no SQL. MongoDB, Redis, used for caching sessions and performance. Firebase, Firestore, real-time apps like chats and mobile applications. And that is we can use. So if your call is Django plus backend development, you can start with SQLite practice and Postgres main production skill, then add MongoDB. If you want, I can also in Python stack, in Python web stack, suggest Django database equals Mongo, Postgres for best for production, SQLite for learning and Django default, MongoDB optional no SQL. So we already know the MongoDB and SQL part, Redis front end basics, full stack knowledge. API documentation like REST APIs, Django REST framework, JSON. JWT server and deployment like Unicorn runs Django in production, Nginx, Docker options but powerful cloud hosting like AWS, Heroku, Virtual. Development tools like Git and GitHub VS Code, Postman for API testing. So for Python web stack, the front end part is clear. The HTML, CSS, JavaScript. Backend part is like Python plus Django plus DRF. Database is like Postgres SQL. Cache is Redis. MySQL, SQLite, Postgres, SQL, PostgreSQL, MongoDB. रिलेशनल बेस्ट फॉर ई कॉमर्स साइट तो हमें बनानी है नो डाउट. यूज इन PHP एप्स, जेंगो फ्लास्क प्रोजेक्ट्स और वर्डप्रेस. तो जेंगो के लिए चल जाएगा ये वाला माई SQL. SQL लाइट भी चल जाएगा जेंगो के लिए, डिफ़ॉल्ट होता है. पोस्टग्रेस भी चल जाएगा जेंगो प्रोडक्शन के लिए, और MongoDB भी चल जाएगा. नोड JS बैकएंड पासिंग डेटा टाइप्स, ये मन वाले के लिए तो सही है MongoDB नो SQL में. बट उसको पाइथन स्टैक में जाना, उसको करना ही पड़ेगा.
So here we are comparing type SQL, SQL, NoSQL. MySQL टेबल्स में होता है, तो हमें पता है ये SQL में तो टेबल्स में होता है. बेस्ट फॉर वेब एप्लीकेशंस लाइक इट्स MySQL. लर्निंग के लिए SQL लाइट, पोस्टग्रेस SQL प्रोडक्शन के लिए, और फ्लेक्सिबल ऐप्स के लिए MongoDB. हाई स्केल एक्सेल एंड स्मॉल ऐप्स बना सकते हैं इससे. गुड. सो इट्स बिटवीन लाइक MongoDB हमें ऑलरेडी आता है. इसके अलावा SQL हमें सीखना है डेप्थ में. In depth we need to learn this. And medium, easy medium. What should you do now? You can start with SQLite, you can move to the PostgreSQL, you can optional but no SQL. Finalize if your goal is web development with Django. 80% of your focus should be on PostgreSQL, SQL concept or ORM understanding. MongoDB is optional, but if you go in Node.js or real-time chat applications. I need to build web applications using Python, Django. What if I learn SQL? If I learn MySQL first, then move to Postgres. That's a good path. It will not waste your time, but there is a smarter way to think about it. You can learn MySQL first, then move to Postgres. But for Django, you should not depend on MySQL specific things. Learn SQL basics. Any DB is fine. MySQL good for beginners. Focus only on select, insert, update, and delete where order. Joins group. These are 90% common in all the SQL databases. Start Django early. Do not wait. Use SQLite default Django database. To do app, blog app, move to production DB, switch to PostgreSQL. Migration is Postgres, indexing relationship at scale. So it's like slightly harder. The beginner friendly is MySQL, Postgres slightly harder, best Django compatibility. Advanced features will be basics. Here we are very powerful. And this uses high, very high modern apps के लिए Postgres use करा जाता है. Can you make a syllabus for PostgreSQL including MySQL topics at first? Postgres syllabus, MySQL to Postgres syllabus based on SQL basics, database fundamentals. CRUD operations. I am making one syllabus for you guys, a mix up of like MySQL and PostgreSQL, so that it will help you to build modern applications in a better way. ORM mapping. I'll just paste it here. Database, tables, rows and columns, primary key, foreign key, basics queries, filtering data, CRUD operations, very important. Join concept inner aggregation space to PostgreSQL core. So we need to move to PostgreSQL
SQL after completing these topics in SQL. Okay, so this will help you. Advanced Postgres Web Dev SQL, JSON and NoSQL features. This is good. This is good. Okay. So with this, anybody who is till now with me, let's wrap this session and we'll continue on next day, means tomorrow at 8:30. Tomorrow 8:30 with the same thing. Those who are watching, guys, make sure to subscribe the channel if you haven't subscribed, right? So bye bye, peace out. Meet you tomorrow with Monstack series and Python. Monstack at daytime, and at night